ओके, आर्कीबैक्टीरिया सिंगल किंगडम है। सॉरी, बस अदनान वर तब मैसेज की वली का तो बार बार रिक्वेस्ट बस मान को सोक पाती दी। हेलो जी सर। ओके सर। अदनान सशो सर दादी मैसेज और तक को सर। ओके सही द टिक्स वाला लग वेट तो कोई ओके सर। अदनान जमा आवाज न राजी। राजी सही दे पर हाँ आवाज राजी हमारा मोबाइल नंबर मुफ्ती ज्वाइन करो और लैपटॉप में बुझे मेरा। मैं सही दे आवाज थी। ओके ओके आवाज ठीक था अदनान? यस सर सही है सर बिल्कुल। ओके, आर्कीबैक्टीरिया का सेल टाइप जो है वो क्या है? प्रोकैरियोटिक इन नेचर है। इफ यू लुक एट द सेल वॉल स्ट्रक्चर, they have no peptidoglycan. There are other chemical structure. They are different from that eubacteria. uh, cell body type जो है this is the unicellular, and again nutrition जो है वो autotrophic है and heterotrophic. एग्जाम्पल जो है वो मिथेनोजन है एंड थर्मोफाइल है, इसमें हेलोफाइल्स हैं. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द आर्की डोमेन एंड आर्की bacteria kingdom. Now come to the third domain, that is the eukarya domain. Eukarya domain are further classified into four kingdom. First kingdom जो है protista है. प्रोटेस्टा की एक सेल टाइप जो है वो यूकैरियोटिक सेल टाइप है और सेल स्ट्रक्चर जो है वो मिक्स है. इफ लुक एट द सेल स्ट्रक्चर, क्योंकि प्रोटेस्टा में सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बिहेव लाइक अ प्लांट, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म बिहेव लाइक अ एनिमल. So we consider the cell structure within the plant. Those protista that have behave like that plants like cell, they will cell wall structure, but they are mixed cell wall structure. If you look at the body type, there are example of unicellular organism and some of the multicellular organism, but protista जो है mostly उसमें unicellular organism होते हैं. If you look at that nutrition, autotrophic and heterotrophic, as we know कि they are considered both living they are considered both plant-like living organism and animal-like organism. So they can prepare they can have autotrophic in nature and heterotrophic in nature. These are the example: amoebas, euglena, kelps. These are the different example of the kingdom protista within eukarya domain. Another kingdom within eukarya domain, that is फंजाई जो है उसका सेल टाइप जो है वो यूकैरियोटिक सेल टाइप है. if you look at the cell structure, specifically for the cell wall, उसका composition जो है that is the chitin. ठीक है, instead of peptidoglycan and other structure, chitin structure are present. फंजाई में पेर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, बट दीज प्रोटेस्टा और फंजाई जो हैं दे आर सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद इन द यूकार्या डोमेन. मोस्टली फंजाई जो हैं वो हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर हैं. एग्जांपल जो हैं वो क्या हैं, यीस्ट हैं और मशरूम हैं. Now another kingdom within eukarya domain, that is the plantae. If you look at the cell type, वो eukaryotic है. If you look at the structure of the cell wall, वो क्या है, इसमें सेल्यूलोज है. ठीक है, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. प्लांट जो है इसमें कोई यूनिसेलुलर का एग्जांपल नहीं है. दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, और एग्जांपल जो है वो पाइन ट्री है और फर्न है. लास्ट वन किंगडम विद इन यूकार्या डोमेन, दैट इज द एनिमेलिया. एनिमेलिया जो है दे हैव यूकैरियोटिक इन नेचर.
there is no concept of cell wall that are in animals. बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. प्लांट जो है और एनिमल जो है, दे आर कम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ऑल किंगडम, in all domain. Or if you look at their nutrition, mostly they depend on other living organism. They can't prepare their food. These are heterotrophic. और एग्जाम्पल जो हैं ऑल एनिमल्स की बर्ड जो है और अर्थवर्म है. So this is the table regarding to the domain kingdom and about their characteristic. Next. ठीक है सर. Okay. डोमेन बैक्टीरिया ये हम फिर एक सेपरेट लेंगे डोमेन का. बैक्टीरिया डोमेन है, आर्की डोमेन है. Contain a single kingdom, Eubacteria. Some scientists call it kingdom bacteria. Bacteria are prokaryotic cell type है. This means they have no nucleus or organelle. If you look at the prokaryotic cell intake and different properties, मेन जो डिफरेंस है बिटवीन दी प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है और ना तो सेलुलर ऑर्गेनेली होती हैं. ठीक है. सो ये बैक्टीरिया जो है दे हैव अ सेल टाइप दैट इज दी prokaryotic cell type. Bacteria are found in particular every environment on Earth. If we look at the aquatic environment, at the terrestrial, aerial, we can find all the living organisms. They are present in all type of ecosystem, are part of ecosystem on Earth. Domain Archaea, a single kingdom. Archaebacteria again prokaryotic cell है that have a diverged very clear early form from bacteria. As we believe कि all living organism जो है वो इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और पहले ऑर्गेनिज्म जो एग्जिस्ट कर रहा था आफ्टर द बर्थ अर्थ वो जो था वो आर्कीबैक्टीरिया था. बिकॉज जो इन्वायरमेंट था वो हार्श इन्वायरमेंट था, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट था, हाई टेम्परेचर जो है सलाइन कंडीशन था, उसी में ये लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहा था. सो दिस इज बिलीव दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम दैट Archaebacteria. They are more closely related to eukaryotic than to bacteria. As I told you और mention मैंने किया है कि जो डायग्राम था, फ्लो चार्ट था, उसी में लास्ट लूका जो है और कॉमन इंसेस्टर जो है वो डिवाइड हो रहा है इनटू टू सेपरेट ग्रुप. और उसी में जो ट्रू बैक्टीरिया है दे हैव आर सेपरेट लाइन. ठीक है, उसका कोई ब्रांच नहीं है विद अदर डोमेन, और सिंगल लाइन जो है वो प्रेजेंट कर रहा है टू ब्रांचेस को. इट्स मीन कि उसमें एक वो डोमेन आर्की है और सेकंड जो है वो यूकारिया है. इट्स मीन कि दे हैव सम कैरेक्टरिस्टिक, शेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक, दे आर क्लोजली रिलेटेड विद द यूकारिया. ठीक है. यस सर. Okay, this is the difference between the domain Archaea and bacteria. That is we call true bacteria. Why they are exist, Archaebacteria, why they are exist in extreme environment? Because of their cell structure and nature of the cell. This structure, this one, represent the सेल मेम्ब्रेन लेयर. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, दिस इज द आर्की फास्फोबाइलेपेट या फास्फोलिपिड बाइलेयर. ठीक है, और ये जो है यूकारिया और बैक्टीरिया का रिप्रेजेंट कर रहा है सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर. और आर्कीबैक्टीरिया क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? बिकॉज ऑफ दिस सेल स्ट्रक्चर कंपोजिशन ऑफ देयर सेल मेम्ब्रेन. इसमें ये बाइलेपिड लेयर है. ठीक है, ये भी बाइलेपिड है और ये भी बाइलेपिड है, लेकिन यूकारिया और बैक्टीरिया में ये गैप जो है ये प्रेजेंट है. ठीक है, और यहाँ पर कोई वो नहीं है, गैप नहीं है. एक ये डिफरेंस हो गया है. सेकेंड डिफरेंस, दे आर ब्रांच मॉलिक्यूल वेदन दैट कार्बोहाइड्रेट चेन जो है ये. ठीक है, ये पॉलीसेकेराइड चेन जो है इसमें ये ब्रांच जो है दे आर प्रेजेंट
एंड द आर्कीबैक्टीरिया। और ये यूकारिया में और सिंपल ट्रू बैक्टीरिया में जो है ये ब्रांच जो है ये एब्सेंट नहीं है। नोट दीज डिफरेंस दैट why they are so important, because आर्कीबैक्टीरिया जो है वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज दे अडॉप्ट सम स्ट्रक्चर ऑन देयर सेल और इनसाइड द सेल. That is why they can exist in extreme environment as compared to the eukarya and bacteria. वो extreme environment में exist नहीं कर रहे हैं because of their composition or structural composition of their cell. एक डिफरेंस तो ये हो गया है कि ये इसमें जो है ये गैप है, ठीक है, और आर्कीबैक्टीरिया में कोई गैप नहीं है, ठीक है. दिस मेक दिस स्ट्रक्चर a compact structure as compared to this one. ये फ्रेजाइल होगा और ये कम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगा, आर्कीबैक्टीरिया का कम्पैक्ट स्ट्रक्चर है. सेकेंड वन जो है ब्रांच मॉलिक्यूल, अगेन इसको रिजिड बनाता है, स्ट्रांग बनाता है. ये ब्रांच मॉलिक्यूल जो आए हैं इसमें शुगर मॉलिक्यूल से, और यहाँ पर ब्रांच मॉलिक्यूल जो है वो एब्सेंट है. दिस इज अनदर प्रॉपर्टी कि इस सेल को रिजिड बनाता है, स्ट्रांग बनाता है एज कंपेयर टू द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट आर प्रेजेंट इन यूकारिया एंड बैक्टीरिया. अनदर डिफरेंस अगेन इसमें ईथर लिंकेज है आर्कीबैक्टीरिया में, और यूकारिया और बैक्टीरिया में जो है वो ईस्टर लिंकेज है, ठीक है. ये डिफरेंस है, उसकी सेल मेम्ब्रेन में जो है ये डिफरेंस है. ये ई लिंकेज और ईस्टर लिंकेज, ये जो है वीक होता है, ये स्ट्रांग होता है आर्कीबैक्टीरिया में. और ये प्रॉपर यहाँ पर ये मेंशन है कि ब्रांच मॉलिक्यूल इसमें है कार्बन से, और यहाँ पर कोई ब्रांच मॉलिक्यूल नहीं है. So this is the difference between the cell membrane structure amongst bacteria, eukarya and archaea domain, ठीक है. इस ये डिफरेंस है. That is why mostly जो एग्जाम्पल हैं आर्कीबैक्टीरिया के, वो उसका जो है एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में उसका हैबिटेट है, और यहाँ पर ये जो है ये नॉर्मल environment में है. So that is why we can say कि living organism जो exist कर रहे हैं in every environment or every type of ecosystem, वो aquatic है, terrestrial है या aerial है, they have some adaptation towards their ecosystem, towards their environment. Adaptation कहाँ होगी? Definitely in their cell structure, in their cell composition. So they can survive, they can adapt, they can adjust with the environment by adjusting their cell composition, by adjusting the cell structure or body structure. Adnan? सही है सर, आवाज आ रही है Okay, सर. okay. Okay, kinds of आर्कीबैक्टीरिया पहले भी इस पे डिस्कशन हुई है, और ये इसके एग्जाम्पल है. मेथेनोजन है, एक्सट्रीमोफाइल है, इसमें नॉन एक्सट्रीम आर्कीबैक्टीरिया भी इसमें है. मेथेनोजन प्रोड्यूस मीथेन गैस, ठीक है, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में है. मेथेनोजन लाइव डीप इन द मड ऑफ स्वैम्प एंड poisoned by even trace of oxygen. Again, this is the survival of this methanogen कि अगर trace amount of oxygen molecule is there, they can't survive. एक्सट्रीमोफाइल में थर्मोफाइल है और हेलोफाइल है. थर्मोफाइल जो है वो हार्ड प्लेसेस में होते हैं, जिस तरह हार्ट स्प्रिंग होते हैं. हेलोफाइल सिलाइन कंडीशन में होते हैं. Inhabit very salty lakes that can be there 3 times as salty as sweet sea water, ठीक है. जो saline कंडीशन है उसमें ये हेलोफाइल्स हैं, और हाई टेम्परेचर वाला एनवायरनमेंट जो है जस्ट लाइक स्ट्रीम जो है वो थर्मोफाइल के एग्जांपल है. अदर एक्सट्रीमोफाइल एंड वेरी एसिडिक प्लेस आर अंडर इनॉर्मस प्रेशर. ये डिफरेंट क्या है इसके? एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है, हाई वेरी एसिडिक कंडीशन है, हाई प्रेशर है, हाई टेम्परेचर है, या अदर टाइप ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल है. बिसाइड दैट जो एयर का कंपोजिशन है गैस का, ऑक्सीजन है जो है मेन, कार्बन डाइऑक्साइड है. बिसाइड उसके अलावा जो अदर गैसेस टाइप हैं उसमें वो है उसका हैबिटेट है.
non-extreme archaebacteria, these grow in all same environment that bacteria do. These are those, again इसमें some example हैं archaebacteria में कि वो नाम एक्सट्रीम इन्वायरमेंट भी है, लेकिन ये एक्सेप्शन केसेस हैं। मोस्टली वेल नोन जो है वो क्या है, एक्सट्रीम आर्कीबैक्टीरिया है, लेकिन सम आर्कीबैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन नॉन एक्सट्रीम कंडीशन, नॉर्मल जो कंडीशन है। ओके, थर्ड वन डोमेन जो है डोमेन यूकारिया है। दे आर फर्दर क्लासिफाई इनटू 4 किंगडम: प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड देयर प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक. मेंबर ऑफ दिस डोमेन आर यूकैरियोटिक. इफ यू लुक एट द सेल टाइप, सेल नेचर जो है वो क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, वाइल आर्कीबैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया का सेल टाइप जो है, सेल नेचर है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक है. अगेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूकारिया, यूकारिया का जो है हाईली ऑर्गेनाइज्ड सेल इंटीरियर, प्रॉपर न्यूक्लियस है, इसमें सेलुलर ऑर्गेनेली जो है वो प्रेजेंट होते हैं. ऑल यूकैरियोटिक है सेल with a nucleus and other internal compartment just like a cellular organelle. Mostly multicellular है इसमें. There is another characteristic जो है sexual reproduction process होता है. Again kind of eukarya जो है, variety of eukaryotic are unicellular. मोस्ट यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक किंगडम प्रोटेस्टा. ठीक है, इसमें फिर क्या है, यूकारिया में किंगडम और सिंपल किंगडम इसमें जो है वो प्रोटेस्टा है. प्रोटेस्टा कंटेन बोथ यूनिसेलुलर and multicellular organism, but mostly protista contain a unicellular organism. Many are aquatic. ठीक है, mostly are aquatic. and protista living organism जो है mostly ये unicellular होते हैं और mostly ये aquatic होते हैं, और some are multicellular organism are there. They have their property just like animal like property है या plant like property है. सेकेंड वन किंगडम जो है वो फंजाई है. फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स किंगडम, फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक दैट आर मोस्टली मल्टीसेलुलर. मेनी फंजाई live and decompose dead organism. Many other are parasitic. So fungi जो है they can't prepare their own food. They totally depend on other source. Just like they can decompose a dead material. That is why they are considered as a parasitic in nature, or they are heterotrophic. थर्ड वन जो है वो प्लांट है, और फोर्थ वन जो है last but not least one, that is the animal or multicellular living organism, part of the eukarya domain. Almost all plants are autotrophic and have cell with cell wall composed of cellulose. If we compare the cell composition with other living organism, they have other cellular composition, but here in plants cell wall जो है वो cellulose का होता है. All animal are heterotrophic, composed of cell. They do not have cell wall. If we compare the animal cell structure with the plant cell structure, again there is a proper difference between, और main difference जो है cell wall जो है वो present होता है and plant और animal में जो है वो cell wall जो है वो absent होता है. Okay, Adnan? जी सर, सही है सर. Okay. अगेन एग्जाम्पल ऑफ किंगडम प्रोटेस्टा. ठीक है, ये फिर देख ले. ठीक है, ऑलरेडी हमने ये बार बार ये रिपीटिशन की है. इसकी प्रोटेस्टा की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यूनिसेलुलर है, एक्वेटिक इन नेचर है, और फिर इसका सेल टाइप जो है वो क्या है, वो यूकैरियोटिक है, और मोस्टली ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं. बट सम आर एज लार्ज एज ट्री. सम एग्जाम्पल एक्सेप्शनल केसेस में प्रोटेस्टा में. किंगडम फंजाई मोस्ट मल्टीसेलुलर. यीस्ट जो है इसमें एग्जांपल भी है यूनिसेलुलर का. फंजाई रिप्रोड्यूस वैरायटी ऑफ एसेक्सुअल प्रोसेस एंड सेक्सुअल मेथड. फंजाई डोंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जनरल अपीयरेंस ऑफ मेनी फंजाई इज सिमिलर टू दैट ऑफ प्लांट. ठीक है, मल्टीसेलुलर एग्जांपल में फंजाई के इस तरह बॉडी स्ट्रक्चर है दैट वी कैन कंपेयर विद द
simple plant like structure. Fungi lack the green pigment chlorophyll. Instead of that, why chlorophyll are present? Because they totally depend on other living organism to get nutrition. That is why they lack a property of photosynthesis, or that is why they are considered as a heterotrophic. Like animal fungi are heterotrophic, just like they cannot prepare their own food. Many fungi live on dead organisms and parasitic. Many other fungi are parasitic and living and on living organisms. So they can cause disease in both plant and animal. ठीक है? Hello? जी सर. Okay, that's it. Farhan, Atya and Zarafshan. Response रखा होगा ना, मत पता न लगी दलता भी यहाँ. जी सर. Okay. इस तरह किंगडम जो है प्लांट किंगडम विद इन यूकारिया डोमेन. प्लांट आर कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफिक. अगेन इसमें ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है. मल्टीसेलुलर है, कम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स है विद इन यूकारिया जो है. पोर्टेबल रिप्रोड्यूस स्ट्रक्चर्स. फिर इसमें क्या है, हाउ दे विल रिप्रोड्यूस, अगेन हाउ दे विल प्रिपेयर देयर फूड. प्लांट जो है ये इसकी करेक्टरिस्टिक है विद इन दिस किंगडम. मोस्टली ये स्टैटिक होते हैं, दे कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. और एनिमल के लिए ये प्रॉपर्टी है, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. दे आर हेटरोट्रॉफिक. Again, how they will reproduce, they have different variety of from simple living animal living organism to the complex. Most animal reproduce sexually. ठीक है? Almost all living organisms or animal are 99% of intervertebrate. तो इसमें क्या है, पेयर एनिमल में क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स हैं. वर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट है, पेयर अगेन इन अदर करेक्टरिस्टिक पेयर. इसको हम मेमेलियन में डिवाइड कर रहे हैं. बर्ड्स हैं इसमें, ये इंसेक्ट है, ये सारे क्या है, एनिमल है. ओके Yes, sir. अदनान. जी सर, सही है सर. ओके तो आप लोग ज़रफ़शान और ये फरहान जी देख सर. ले, अपने स्टूडेंट देख ले और इसको एक पेज पे नोट करें. ज़रफ़शान आप गर्ल्स को नोट करें और फरहान आप बॉयज़ को नोट करें पेज में. फिर वो पेज जो है मुझे व्हाट्सअप कर दो. ओके सर. ठीक है? और इस तरह अदनान एंड अत्या जो है वो गर्ल्स को नोट करे और अदनान आप बॉयज़ को नोट करें. ओके फिर ये सर. पता चल जाएगा, क्योंकि कंबाइंड क्लास है, इसमें मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले ओके सकता, सर. मिक्स हैं स्टूडेंट. ठीक है? जी सर, सही है. ओके फिर मुझे बता दे. ओके सर. ओके फरहान क्लास खत्म चुका ना. ولا كان فوق ما تقول رقم كان हाँ नेम जूली कहते हैं ना डबल सर मात्र पिक्चर्स वागस the percent one by one because to turn liquid in the collation